आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम has stated. Actually, everybody want to know about his house in Jannah. Everybody need house in Jannah. We have address. We saw our house in dunya. Maybe you have one house in UK and one house in another country like in Pakistan or in India, in Bangladesh. But nobody knows about his house in Jannah. But subhanallah, the hadith which I inshallah mentioned in front of you, beautiful hadith. The Rasul Pak said, Man salla alayya fi yawmin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannah. Whosoever recites 1,000 salat upon me, they shall not die until they see their place in Jannah. Subhanallah. जन्नत में जाने का फॉर्मूला है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना। चलते फिरते उठते बैठते, try to recite in abundance. Unfortunately, nowadays we waste our time on mobile, on social media, hours and hours, 3 hours, 4 hours daily. And for 1,000 times, we need only half an hour or 40 minutes. And if we spend 40 minutes to recite through their part, subhanallah, what a beautiful reward. That they shall not die until they see their place in Jannah. Allah kare, may Allah give us chance to recite at least 1,000 times daily. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear Islamic brothers, in order to bring people out of the darkness of disbelief, misguidance and bad deeds, Allah Almighty granted the status of prophethood and messengership to His closest servants and sent them into this worldly domain. These blessed individuals called towards the acceptance of the oneness of Allah Almighty, prohibited the association of partners with Him, gave good news of Jannah to those who accepted the message of Islam, and presented warning of punishment to those who denied or disbelieved this message. The most illustrious of all of creation are the honorable prophets, and these noble individuals shine like pearls and jewels compared to the rest of mankind. The topic of today's bayan, inshallah, is concerning the biography of two noble prophets, Sayyiduna Dawood and Sayyiduna Suleman alayhi wassalam. Come with good intention, let's now hear about these sanctified and esteemed personalities. वो कमाल की दो हस्तियां जिनका जब जिक्र आप सुनते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो सर अदब से झुक जाता है। वैसे कायनात की बेहतरीन हस्तियां अंबिया किराम हैं, और उन नबियों में 2 नबियों के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। Unfortunately, nowadays we know so many things about, if you say to any youngster that please write down the name of singers, may he write down so many names of singers, actors, players, even politicians. But if you say any Muslim youngster that please write down the name of Ambiya kiram, Sahaba kiram, then Awliya kiram, then you know the picture, what's going on. And where are we right now? हमारी जो generation है, हमारे जो बच्चे हैं, खुद हम कितना नबियों के बारे में जानते हैं? How much know about Ambiya kiram and prophets and Sahaba and Ahle Bayt? So please, in this bayan, inshallah, we'll learn about two beautiful and big personalities, but
before the start of Bayan, try to realize that we must know about Ambiya Ikram, about Sahaba Ikram, about Awliya Ikram. As we know about, so many other personalities in the world, which is not important to know. वो जानना जरूरी नहीं है, नहीं जानो तो कोई नुकसान नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो जानना फजूल हो जाता है। मगर बहुत कुछ पता है दुनिया के बारे में, नहीं पता तो कुरान और हदीस, अंबिया, औलिया और सहाबा के बारे में नहीं पता। When Talut became the king of Bani Israel, he began to prepare them for war against Jalut, a disbelieving king. He brought his forces into the battlefield, and when both sides faced another, Jalut called for somebody to face him in battle. As he was extremely arrogant, powerful, strong, heavily built and tall, the army of Talut panicked upon seeing his power and physical appearance. Previously, Talut announced amongst his army that whosoever kills Jalut shall be married to his daughter and receive half of his kingdom. So, despite this reward, nobody from the army of Talut replied to the call of Jalut. Upon this, Talut requested Sayyiduna Shamwil alayhi salam to supplicate in the court of Allah Almighty. आप दुआ करें कि ताकि इस जालिम से निजात मिले. After having done so, Sayyidina Shamwil alayhi salam informed them that Sayyiduna Dawood alayhi salam will be the one who to kill Jalut. Isha, the father of Sayyidina Dawood alayhi salam, was in the army of Talut, and he was accompanied by all of his sons. Sayyidina Dawood alayhi salam was the youngest of them all, unwell at that time, and his blessed complexion had become pale due to this. बीमारी का आलम है, रंग जर्द हुआ है, feel strong नहीं कर रहे. When Talut forwarded his proposition to Sayyidina Dawood alayhi salam that if he were to kill Jalut, he shall receive the former's daughter in marriage and acquire half of the king's domain. Sayyidina Dawood alayhi salam accepted this offer and set off in the direction of Jalut. ये कैसा मुकाबला था? एक ऐसी शख्सियत जिसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, रंग भी जर्द हुआ है, और सामने एक लंबा तरंगा और जिसको कहें ताकतवर शख्स जो उनका सरदार है वो मौजूद है. As battle formations were adopted by both sides, Sayyidina Dawood alayhi salam confronted Jalut with a sling in his blessed hands. Upon seeing this, fear and panic arose in the heart of Jalut. However, he attempted to disguise these feelings with arrogant words, desiring to overpower Sayyidina Dawood alayhi salam with his oath. Sayyidina Dawood alayhi salam proceeded to place a stone in his sling and throw it towards Jalut, striking him in the front of the head and exiting out of the back, and the disbelieving king fell dead onto the floor. Sayyidina Dawood alayhi salam brought the body of Jalut and deposited it in front of Talut, and all of the Bani Israel rejoiced at this sight. As per his promise, Talut married his daughter to Sayyidina Dawood and gave half of his kingdom to him. After some time, Talut passed away, and Sayyidina Dawood became king over the entire of the domain. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Allah Almighty granted His prophets unique and awe-inspiring qualities that were not given to the rest of mankind. In the previous narration, upon seeing the power and physical stature of Jalut, the Bani Israel panicked and none of them desired to face him in battle. However, Sayyidina Dawood was not at all perturbed or affected by this and faced him in battle despite being young and unwell, defeating Jalut with simply a single stone. After Sayyidina Yusuf salam, Sayyidina Dawood is that individual who was honored with both prophethood and kingship over a kingdom. For around 70 years, he salam fulfilled the responsibilities of both positions. After him, Allah Almighty also granted his son Sayyiduna Suleman salam prophethood and ruling over a kingdom.
सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह चाहे उसे इज्जत अता फरमाए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, सुभान अल्लाह। His blessed name. And now little introduction of Sayyidina Dawood alayhi salatu wasalam. You must know about our beloved Ambiya kiram alayhi salam. And alhamdulillah, being a Muslim, we love all prophets, alhamdulillah. It is the beauty of Islam. His blessed name is Dawood, and his lineage is as follows: Dawood bin Isha bin Uid bin Abir bin Salmon bin Nashun bin Oenzib bin Aram bin Hasrun bin Faras bin Yehuda bin Sayyiduna Yaqub bin Sayyiduna Ishaq bin Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam. ये इनका शजरा था, and he alayhi salatu wassalam was of utmost and excellent beauty. And in explaining his blessed physical appearance, Sayyiduna Ka'b radiyallahu ta'ala narrates, Sayyiduna Dawood alayhi salatu wassalam possessed a radiant face, soft and elegant hair, fair complexion and a lengthy beard. Subhanallah. एक और खूबसूरत बात बताऊं, जितने भी prophets, all prophets, तमाम जितने अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने सबको बड़ा सोहना, बड़ा खूबसूरत बनाया था। और जिसको रब अज़्ज़ा वजल ने अपने दीन की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग का काम दिया, उसको बेऐब पैदा किया। किसी प्रॉफिट में कोई ऐब नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि इनका काम ही दीन की तरफ बुलाना था। तो जिसको दीन की तरफ बुलाने के लिए रब ने सेलेक्ट किया, अगर उसमें कोई ऐब हो है तो लोग तो उसके करीब नहीं आएंगे। तो तमाम अंबिया जो हैं वो बेऐब हैं, और सुभान अल्लाह, अंबिया के सरदार हमारे आका की तो शान ही निराली है। ऐब तो दूर की बात है, गुमाने ऐब, गुमाने नक्श भी जहां नहीं है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अच्छा, एक और खूबसूरत बात कि आज भी जिन लोगों को अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत के लिए चुना है ना, अल्लाह ने उनके चेहरे पर भी बड़ा नूर अता फरमाया है। हाँ, उनको भी ऐबों से पाक फरमाया है। आप देख लें औलिया किराम को, या उन लोगों को जिनको मरजाए खलाइक बनाया, जिनकी तरफ लोगों का रुजू है, रब्बे करीम ने उनके चेहरे पर ऐसी नूर और ऐसी फ्रेशनेस दी है कि जेड़ा तकदा एक बारी वो तकदा ही जानता है। ऐसे ऐसे औलिया किराम गुजरे, ऐसे पीरो मुर्शिद होते हैं। आज के दौर में हम देखें हमारे अमीर अहले सुन्नत का चेहरा, बंदा देखे तो देखने को बार बार जी चाहता है। तो अल्लाह करीम दीन के दाई जो होते हैं उनको बड़ी बरकत अता फरमाता है। बहरहाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तो रब्बे करीम ने ज़ाहिरी हुस्न से भी नवाजा, और आपकी जो वॉइस थी, सुभान अल्लाह, आपकी आवाज की तो क्या बात है। Alongside possessing utmost physical beauty, Sayyidina Dawood अलैहिस्सलाम was gifted and beautiful voice. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu states, Allah Almighty granted Sayyidina Dawood अलैहिस्सलाम an unmatchable and melodious voice, the likes of which was granted to no other. When he अलैहिस्सलाम would recite the Zabur in melody, the birds would cease their flight in the skies. आसमान पर परिंदे रुक जाते थे जब हजरत दाऊद ज़बूर की तिलावत किया करते थे। And match their voice with his, परिंदे साथ पढ़ना शुरू कर देते थे। As well as recite tasbih, the glorification of Allah Almighty. When he recites zikr alongside him, in the same way, day and night, even mountains would make tasbih of Allah Almighty alongside Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam. पहाड़ भी साथ तस्बीह करते थे। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि तआला states, nobody was granted a voice as beautiful as that of Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam. Birds and animals would gather around him when he would recite the blessed Zabur and remain so engaged in its recitation that they would even forget eating and drinking. जो जानवर होते थे वो खाना पीना भूल जाते थे, until some of them would even pass away from hunger and thirst. Subhanallah. Alongside the beauty of his blessed voice, Sayyidina Dawood also possessed the unique quality of being able to complete full recitation of the Holy Zabur in a small amount of time. As the Holy Prophet has stated, Hadith Pak,
Recitation was made easy upon Sayyidina Dawood alayhi nabiyina wa alayhi salam. He would give the order for a saddle to be placed upon a horse, and before the horse was prepared, would read the entire Zabur. To Islamic brothers, perhaps Shaitan places the satanic whisper, ho sakta hai kisi ko waswasa hai, in the mind. How could the entire Zabur he finished in a small amount of time? The response to this is as follows: that this is the prophetic miracle of Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam. In the short time it takes for a horse to have saddle and reins affixed upon it, he would recite the entire Zabur. Prophetic miracles are referred to as those events which are rationally impossible, meaning they are not possible normally. Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam is a prophet of Allah, and the status of the honorable prophet is very elevated and lofty. Allah Azza wa Jal has also granted the followers of his beloved sallallahu alaihi wasallam unique qualities. Ambiya ki to shaan nirali hai. Aao main sahaba ka waqia sunata haan. Ye shaan hai unke ghulamon ki, sarkar ka alam kya hai. Chahe to isharon se apne kaya hi palat de duniya ki. ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा. It is narrated regarding मौला कायनात, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, when he would sit upon a horse and place one foot in a strip, he would begin to recite the Holy Quran upon placing his other foot in its respective strip and sitting upon the saddle of the horse. In this time, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem would complete an entire recitation of Holy Quran. Subhanallah, Subhanallah. Allah वालों की शान जो है वो निराली होती है. Subhanallah. Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam की बात हो रही है. This divinely revealed book was granted to Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam by Allah Almighty. And he states in Holy Quran, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, and we gave the Zabur to Dawood. There are 150 surahs with this holy book, with supplications, praise and glorification of Allah Almighty found therein. It did not contain explanation of halal and haram. Subhanallah. The Holy Prophet ﷺ has stated, Allah Almighty sends revelation to Sayyidina Dawood ﷺ. O Dawood, give good news to the sinful and relate fear to the truthful, those who are pious and sincere. Listen carefully. गुनाहगारों के लिए भी सबक है और इसमें नेकूकारों के लिए भी सबक है. Sayyidina Dawood ﷺ was greatly surprised by this, and so he requested, Ya Rab, what good news should I give to the sinful, and what sort of fear should I convey upon the truthful? Allah Almighty stated, O Dawood, give this good news to the sinful, that no sin is greater than my forgiveness. रब की शान तो देखो, रब की करीबी देखो कि रब फरमाता है, दाऊद मेरे बंदों को कह दो कि कितने ही गुनाह क्यों ना हो, मेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी माफी से बढ़कर कुछ नहीं है. अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, मगर अगर नेकियां करके तकब्बुर भी नहीं करना है, सेटिस्फाई भी नहीं होना है, then दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ओ दाऊद, give the good news to the sinful, that no sin is greater than my forgiveness, and tell the truthful to be fearful in this matter, that they should not be happy over their righteous deeds, as whoever I have taken to account regarding my favors will be destroyed and ruined. जब नेमतों का हिसाब लूंगा, अगर किसी से लिया तो वो जवाब नहीं दे सकेगा, बस अल्लाह की रहमत ही का आसरा है. अदल करे के थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, हम अदल के नहीं हैं, हम रहमत के सवाली, हम करम के सवाली, हमारे पास है क्या? कभी सेटिस्फाई नहीं होना नमाज पढ़ के, रोजे रख के, चैरिटी करके कि जनाब आई एम नाउ वेरी पायस पर्सनालिटी, आई प्रेड 5 namaz daily, I'm giving charity in the way of Allah. No, I'm nothing. Because if He account us, He make account on us, then we have no answer. Adil kare ke thar thar kamban, uchiyan shana wale, fazl kare te bakshe jasan, मैं वर्गे मुंह काले. हम फजल के सवाल, रहमत दार
दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम पड़ जावे मेरा। हमें बस कतरा चाहिए उसकी रहमत का आसरा रखना है। कभी अपने आमाल पर हमें जो है भरोसा नहीं करना और उस पर फख्र नहीं करना। I have taken, Allah says, as whosoever I have taken into account regarding my favors will be destroyed and ruined. Oh Dawood, if you desire to love me, remove love of the world from your heart, as love of me and the world cannot be gathered together in one heart. अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो दुनिया की मोहब्बत निकाल। दुनिया की मोहब्बत भी हो और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ जमा नहीं होती हार्ट के। We have to clear our heart. इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नबी पाक के इश्क को दिल में बसाना है, if you want to take love of Rasul Pak in your heart, you have to clear our heart with the bad, evil, habits like the proud. इसके साथ जो backbiting कर रहे हो, हम लोगों के लिए नेगेटिव अप्रोच रखा है, कीना रखा है, बुग्ज रखा है, और हम कहते हैं यही दिल इश्क रसूल का मदीना बन जाए। We have to clear our heart. Allah subhanahu wa ta'ala told Sayyidina Dawood alayhi salam, if you want to love me, you have to clear your heart with the love of the King. ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Hazrat Sayyidina Dawood alayhi salam, subhanallah, beautiful habits you have. At that time, Allah Ta'ala said, in solitude, the remembers me when negligent people are engaged in their negligence of my remembrance. He thanks me for my favor at that time when the forgetful ones remain forgetful of me. Dear Islamic brothers, from the aforementioned narration, it is understood that only he who removes love for the world from his heart can attain the station of loving Allah Almighty. This is because love of the world and love of Allah Almighty cannot be gathered together. Secondly, we come to learn that worship performed at night is greater and the means of attaining the love of Allah Almighty. The virtues of performing worship at night have also been mentioned in blessed ahadith. ये जो रात को उठकर नमाजें पढ़ना है ना, ये अकेले में अल्लाह को जो याद करना, ये अल्लाह के करीब होने का तरीका है. It is a way to become near to Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala narrates hadith of Muslim Sharif that the leader of all the prophets, the beloved of Allah Azza wa Jal, has stated, after Ramadan, the greatest of all fasts are Muharram and the month of Allah Almighty, and after obligatory Salah, the greatest of all Salah are those offered at night. रात की जो इबादत है ना, बिस्तर छोड़कर अल्लाह को याद करना. अल्लाह करे कि हमें तहज्जुद नसीब हो जाए, हमें रातों को उठकर अल्लाह को याद करना नसीब हो जाए. आज तो रातें ऐसी गुजर रही हैं कि बंदा जब तक फिल्में नहीं देख रहा, ड्रामे नहीं देख रहा, मोबाइल पर गंदी चीजें नहीं देख रहा, उसे नींद नहीं आ रही. सोचो तो सही, अगर ये सब कुछ देखकर सोए और इसी सोते सोते में चले गए तो ऐसा होता है ना. लोग कहते हैं रात को सोया सुबह नहीं उठा. हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है. बावजू दुरूद पढ़ते पढ़ते, काश सलातो तौबा पढ़ के दुरूद पढ़ते पढ़ते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अल्लाह मुझे और आपको गफलत की रातों से महफूज फरमाए. आए हाय, आज मैं और आप अपनी फैमिली को क्या सिखा रहे. सुनो, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम what teach subhanallah to his family. Sayyidina Dawood ﷺ would keep his household members engaged in the worship of Allah Almighty. Sayyidina Sabit Bunani rahmatullahi ta'ala states, news reached us regarding Sayyidina Dawood ﷺ that he divided salat upon his household member and family in such a manner that at all times of day and night someone would be busy performing the worship of Allah Almighty. दिन और रात में हर वक्त कोई ना कोई उनके घर में अल्लाह की इबादत ही कर रहा होगा. कैसा घर था और कैसी घर है. आज हमारे घर में क्या, दिन में भी ड्रामे, गाने, म्यूजिक, रात भी गाने. पहले घरों से तिलावत की आवाजें आती थी. मुसलमान का घर होता था, in the morning people used to hear the voice of tilawat, Naat Sharif. But nowadays, whole day music, whole
day bad deeds. फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं है, there is no बरकत in my house. So many problems, calamities, fights, nobody happy with each other, no बरकत. हम कर क्या रहे हैं? हमने खुद अपने हाथों से ही बरकतें दूर की हैं. कहाँ है तिलावत कुरान, कहाँ है दुरूद पाक, किधर है नमाज? अच्छा हमेशा याद रखें, जो बच्चे हैं ना, जो फैमिली चाइल्डहुड जिनका होता है बच्चों का, वो अपने एल्डर्स से सीखते हैं. they learn with their elders. आप देखिए जिस घर में नमाज होती है ना, माँ बाप नमाज पढ़े, दादा दादी नमाज पढ़े, छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं. उनको नहीं आती नमाज फिर भी पढ़ रहे होते हैं. छोटी सी बच्ची होती है, सर पे दुपट्टा बांधती है क्योंकि वो अम्मी को देखती है, अम्मी दुपट्टा बांधती है, नानी जान दुपट्टा बांधती है, and grandmother praying namaz, so she came and start namaz because they learning with their parents. मगर आज क्या हो रहा है? वालिद भी गाने गा रहा है तो बच्चे भी गाने गा रहे हैं, अब्बा भी गालियां निकाल रहा है तो बच्चा भी वही कर रहा है. मादअल्लाह वालिद बच्चों के सामने ड्रग्स या सिगरेट पी रहा है, छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, अब्बू भी यही करते थे, मैं भी यही करूंगा. जो माँ बेपर्दा घूमती है वो कैसे एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बच्ची पर्दा करेगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप दुआएं करवाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, दुआ करें मेरे बच्चे नेक बन जाए. पहले आप तो नेक बने, मैं तो नेक बनूं. इफ वी वांट कि मेरे बच्चे पायस हो जाए, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग मी. मेरा अच्छा कोई बाप सिर्फ 5 वक्त की एक भी नमाज ना पढ़े, जुम्मे की नमाज पढ़े और खुद तमन्ना करे मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, कैसे पॉसिबल? आप फजर में उठे ना, आप नमाजों में उठे, फिर अपने बच्चों को कहें तो वो इंस्पायर होते हैं. तो बेस्ट टीचर और इंस्पिरेशन बच्चों की जो है वो उसके पेरेंट्स होते हैं. Look at the beauty of the house of Sayyidina Dawood alayhi salam. Everybody of his household, यानी एक लम्हा कोई घर में इबादत नहीं कर रहा है. कैसा पारसा, कैसा नेक घर है. अल्लाह सैयदना दाऊद अलैहि सलाम के सदके हमारे घरों को भी नेक बना दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे, हमारे घरों में तिलावत का दौरा हो जाए. मगर प्लीज माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who are watching me on channel, we have to correct ourselves. हम ठीक हो जाएं, हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएं. पहले हमें नेक बनना हो. अच्छा माँ बाप नेक हो जाए ना, फिर उनकी दुआ से वैसे ही बेड़े पार हो जाते हैं. जब वो नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे बच्चों के लिए, अल्लाह और करम फरमा देगा. हम अपने आप को पहले ठीक करें. सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खूबियां, अल्लाह के नबी हैं, उनकी तो खूबियां ही खूबियां हैं. मगर एक और कमाल का आपका बस, इतनी खूबसूरत आवाज, अल्लाह के नबी, किंग, पूरी किंगडम के किंग हैं आप, ठीक है ना. और फिर तस्बीह करने वाले, तिलावत करने वाले, इसके साथ साथ इतना कुछ था, मगर अल्लाह का खौफ कैसा था? Fear of Allah, Allahu Akbar. Listen, Sayyidina Dawood alayhi possessed great fear of Allah Almighty. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam stated, people would visit Sayyidina Dawood alayhi salam considering him to be unwell. However, he would have no illness. Rather, he would be engrossed in the fear of Allah Almighty. लोग समझते थे आप बीमार हैं, मगर आप बीमार नहीं होते थे. आप अल्लाह के खौफ से निढाल हो जाते, इतना रोते थे. आपने इतने आंसू बहाए हैं. अल्लाहु अकबर. Sayyidina Ibn Sabit rahmatullahi ta'ala narrates that after Sayyidina Adam alayhi salam, if the tears of Sayyidina Dawood alayhi salam which flowed from his blessed eyes due to the fear of Allah Almighty were compared to all of the tears of the people of the earth, both would be equal. सारी दुनिया के आंसू एक तरफ, हजरत दाऊद अलैहि सलाम के आंसू. क्यों रोते थे भाई? बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती हैं, अल्लाह के नबी हैं. मगर ये अल्लाह वालों को खौफ भी अल्लाह का ऐसा होता था. और आज हम हैं, उनके गुनाह नहीं होते, याद रखिएगा. Ambiya's innocent, there is no possibility of sin from him. सारे अंबिया जो है वो मासूम हैं. हम गुनाहों के अंबार तले दबे हुए हैं. There is no fear, there is no tears in our eyes, no shame. हम सोचते भी नहीं हमारा बनेगा क्या. ये अल्लाह वाले इतना रोते थे. और खौफे खुदा की तो क्या बात है. अल्लाह अकबर. नबी पाक अलैहिस्सलाम said that सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम वो asked about a deed which shall cause many people to enter Jannah. He sallallahu alaihi wasallam stated in reply, fearing Allah Almighty and good character. ये दो चीजें वो हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल. चेक तो करें हमारे दिल में कितना खौफ है.
we have fear of Allah in our heart. अगर अल्लाह का खौफ होता तो अकेले में गुनाह कैसे करते? How we make bad deed in loneliness, nobody watching us. कोई देखे ना यार, लंदन में नहीं, कहीं किसी और कंट्री में चलते हैं, यहाँ सब जानने वाले हैं ना. Let's move towards northern area of UK or go to Europe or any other part of the world, so we can enjoy there and we can, make bad deeds over there. Why? There is no Allah subhanahu wa ta'ala. क्या वो अल्लाह नहीं देख रहा? Please try to understand. काश हमारे दिल में एक ऐसा एहसास उजागर हो जाए, whenever we want to commit sin, हमारे दिल से, हमारे हार्ट से एक वॉइस आए, एक अलार्म आए, whatever you doing now, your Allah watching you. Allah देख रहा है. Subhanallah. Now come towards beautiful another personality, Sayyiduna Suleman alayhi salatu wassalam. He is the son of Sayyiduna Dawood alayhi salatu wassalam. Firstly, Sayyiduna Suleman alayhi salatu wassalam is the son of Sayyiduna Dawood alayhi salatu wassalam, and Sayyiduna Suleman alayhi salatu wassalam became the inheritor of his blessed father, and he was also honored with prophethood and great knowledge, as well as becoming ruler of a grand kingdom. He remained in this esteemed position for 40 years. He maintained rule over mankind, jinns, devils, birds, animals, etc., and also was given knowledge of their respective languages. In this time, many unique inventions and industries became apparent. Allahu Akbar. Allah ने अपने नबी को कैसा कमाल दिया. इंसान तो इंसान, जिन्नात पर भी हुकूमत दी, हवाओं पर भी हुकूमत दी, जानवरों पर भी हुकूमत दी. और हजरत सुलेमान का कमाल तो ये था कि आप जानवरों की और परिंदों की बोलियां भी जानते थे, आप उनकी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करते थे. His blessed name is Suleman alayhi salatu wassalam. Sayyidina Suleman alayhi salatu wassalam was honored with Allah Almighty, referring to him as his special favor. Also, he was honored with prophethood, wisdom, and a vast kingdom, also becoming the inheritor of Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Holy Quran, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ, and we bestowed Suleman to Dawood. Subhanallah. Allah Almighty also stated, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, and Suleman became Dawood's successor. It is narrated that there were 4 kings in history. Try to understand. It's very beautiful knowledge. That there were 4 kings in history who ruled over the entire world. And from them, 2 are Mu'min and the other 2 disbelievers. We must know that. From the Mu'mini, Sayyiduna Suleman alayhi salatu wassalam and Sayyiduna Zulkarnain radiyallahu ta'ala. And the 2 disbelievers who ruled over the world were Bakht-e-Nasr and Namrud upon the face of the earth. There is a 5th king who shall be found from amongst this ummah, and his blessed name is Sayyiduna Imam Mahdi radiyallahu ta'ala. Inshallah, he will come inshallah. Sayyiduna Suleman alayhi salatu was extremely kind and merciful upon orphans and the unwell. He would even make their hearts happy by arranging food for them. Sayyidina Abu Imran al-Jawani rahmatullahi ta'ala narrates, Sayyidina Suleman alayhi salatu wassalam would give very beautiful and expensive foods to those suffering from leprosy and orphans, whereas he would simply eat wheat himself. Subhanallah, khud सादा खाना खाते थे और गरीबों को अच्छा खाना खिलाते. अल्लाह की राह में खर्च करना. मैं एक्चुअली हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, हम अंबिया की बायोग्राफी भी जान रहे हैं, and try to take some knowledge and try to implement it ourselves. हम कुछ सीखने भी तो जाए ना. अपनी जिंदगी में हमें क्या करना है, किस फुट स्टेप को फॉलो करना है. ये बादशाह होते थे और गरीबों का ख्याल रखते थे. आज हमारे पास बज़ाहिर कोई ऐसी बादशाह नहीं है, लेकिन लोगों को गरीबों का ख्याल नहीं होता है. उनका स्टाइल ही बदल जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं. नहीं जनाब, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. अल्लाह को आजी बड़ी पसंद है, तो गरीबों का ख्याल रखना है, परेशान हालों की मदद करनी है. और सुभान अल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खौफ खुदा सुनाना. हजरत सुलेमान की हुकूमत कैसी है कि जिन भी आपके ताबे हैं, हवाएं आपके ताबे हैं, तो आपके चरिंद परिंद आपके अंडर कंट्रोल हैं. इतनी बड़ी बादशाहत है. और अल्लाह का खौफ कैसा है? Fear of Allah. Allah Almighty granted Sayyidina Suleman alayhi salam unmatched bounties and blessings. Even with this, Sayyidina Suleman alayhi salam would fear Allah Almighty
in a profound and distinguished manner. Sayyidina Abdul ibn Umar radiyallahu ta'ala narrates that the Messenger of Allah sallallahu ta'ala sallam stated, whatever Allah Almighty granted Sayyidina Suleman alayhi salatu wasalam, meaning knowledge, prophethood, wisdom and kingship, despite this, due to the fear of Allah Almighty, he never raised his sight to the skies. Hazrat Suleman ने कभी आसमान ही नहीं देखा, अल्लाह के खौफ से कभी नजर ही नहीं उठाया। हाय हाय हाय, ये कैसे लगते हैं? अल्लाह इनके सदके हमें अपना खौफ अता फरमा, इनके सदके अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी क्वालिटीज ऐसी हैं, इनको रब्बे करीम ने कैसा नवाजा था। इनका एक और बड़ा कमाल का जो है वो जो वस्फ है जिसको कुरान ने बयान किया, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम would remain engaged in the remembrance of Allah Almighty and praise Him at all times. It is a statement of Allah Almighty. लेकिन मैं और आप अल्लाह को याद करें तो ये हमारा काम है। जिसको अल्लाह अपना याद करने वाला कह दे उसकी शान कैसी हो। अल्लाह said in Quran पाक, वहबना लिदावूद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। What is the meaning of awwab? And we bestowed Suleman to Dawood. What an excellent bondsman. He is indeed most repenting to Allah. बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। Dear Islamic brothers, Sayyidina Suleman alayhi salam is a prophet of Allah, and every prophet is innocent, meaning it's impossible for them to commit any form of sin. However, Sayyidina Suleman alayhi salam would still spend his time in remembering Allah Almighty and praising Him. He alayhi salam would return to Allah Almighty frequently. Then there is us who do not even have a single good deed in our books, who are covered in sins from head to toe, do not find even a single minute in the day to remember Allah Almighty. We should strive to spend some time to remember Allah Almighty, and as much as possible remember Him. Many excellence of remaining Allah subhanahu wa ta'ala are mentioned in the Holy Quran and blessed ahadith. Subhanallah. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu states, hadith of Muslim Sharif, that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by a mountain named Jumdan while traveling on a path of Makkah and said, you should visit this Jumdan. The Mufarridun have excelled. The Sahaba asked, Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, who are the Mufarridun? He alayhi salatu wasalam replied, those males and females who remember Allah in abundance. दर्जे उनके बुलंद होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। सुभानअल्लाह। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु states, there is nothing that protects one more from the punishment of Allah Almighty that the zikr of Allah. काश हमारी जबान भी अल्लाह का जिक्र करने वाली। बिलीव करें, जब जिक्र का मजा है ना वो मिल जाए तो क्या बात है। जरा मिलकर कहो ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। I think when you recite these three sentences, less than 30 seconds we spend in this zikr. Okay, but you know what you earned, mashallah. In your UK, mashallah, there are so many brothers earning so much money. How much money you earn in 30 seconds when you work anywhere in the world? कितने पैसे कमा लोगे 30 seconds? 10 pounds, 20 pounds. First of all, calculate, because here you get money in hourly basis. Okay, so if you earn 20 hours, 20 pound an hour, it's very good wages. Okay, if you earn 20 pound in an hour, so how many for 1 minute? I think less than pound. Okay, and for 30 seconds. Pennies. In 30 seconds, no big amount we can earn in this dunya. Subhanallah, with the zikr of Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if anybody, hadith, summary of hadith, if anybody recites Subhanallah or Alhamdulillah or Allahu Akbar, the tree will be planted for him in Jannah. Jannat mein us padhne wale ke liye darakh laga diya jata. In 30 seconds, mashallah, you earn 3 plants, 3 trees in Jannah. Subhanallah, we all have no power to buy a tree in heaven. हम में से किसी के पास ताकत नहीं है, मगर जिक्र करते जाओ और जन्नत में दरख्त लगाते जाओ। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह, 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 अल्लाह। क्या बात है मेरे रब, जिक्र करो ना अल्लाह, याद किया
जरा मिलकर कहो मोहब्बत से अल्लाह। अच्छा, लफ्ज़, लुक एट द वर्ड ऑफ अल्लाह, अलिफ लाम लाम एंड हा। ओके, खूबसूरती बताऊं, अल्लाह के वर्ड में से अलिफ निकाल दो, बन जाएगा लिल्लाह। लाम निकाल दो, लहू, फिर भी अल्लाह की तरफ जिक्र हो जाएगा। और फिर भी लाम निकाल दो तो हू, फिर भी उसी की याद रहती है। वर्ड जुदा भी हो जाएं मगर रब का जिक्र फिर भी बाकी रहता है। ये शान है मेरे रब की, मगर फिर भी तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। प्लीज, जिक्रुल्लाह जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हें अपनी मजलिसों में याद फरमाएगा, फरिश्तों के सामने याद फरमाता है। और जिक्र जो है वो दिलों का चैन है। It's a big problem in UK, in a Western world. Everybody try to find the peace of heart. There's somebody going towards drugs and somebody going towards casinos and gambling and bad deeds and parties. There is no peace. If you want to take a peace for your heart, अगर आप तलाश में हैं दिल के सुकून की, who give you better advice? You know, manufacturer knows better. जब भी किसी गाड़ी को आप खरीदते हैं, if you buy a watch or mobile or something, they give you any with book, the guideline book with that particular product. This button is there and this function is like this. You have to read that menu book and then you know about that product. Okay, so you know who made us, who is Khaliq of us? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka is a creator. Okay, He knows well that where is the peace of heart, and He told us in the Holy Quran, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। Indeed, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन। Say once again, Allah, 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 Allah. Close your eyes and remember your Allah. Allah, Allah, Allah. Feel that I'm better. Ya Allah, bestow your bounties on us. Allah, Allah, Ya Allah, need your rahmah. Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sometimes there is a problem. लोग कहते हैं यार, आप कहते हैं जिक्र से चैन मिलता है. When we recite and when we make zikr, we receive a peace in our heart, but I am not receiving any type of current or any type of peace in my heart. And I become bored when anybody recites Quran in front of me, or if I go in the masjid, I feel sleepy. I want to go out. I'm not feeling well in masjid. I'm not feeling good in ijtima, in mahfil. And you are saying that when you recite or when you listen to the zikr of Allah and tilawat and in this type of big gathering, inshallah, you will receive barakat. What is the difference? आज मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। जिसको ये फील होता है कि यार मुझे तो ना नमाज में सुकून मिलता है, ना तिलावत में सुकून मिलता है, आप कहते हैं अल्लाह के जिक्र में सुकून है, मुझे तो इन महफिलों में अच्छे नहीं लगता, बोर होने लगता हूँ, नींद आने लगती है। What is the problem? Okay, let me explain. When you have fever, जब आपको बुखार हो जाता है, you not feeling well, आपका मुंह जो है, आपका जो मुंह का जायका होता है, वो क्या हो जाता है? बिटर, कड़वा। Not like anything. ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, even family अच्छी नहीं लगती है. When you are not feeling well, nobody, no one want to like to meet anybody. You want to sleep alone. मगर आप क्या करते हैं? जब तबीयत खराब होती है, आप खाना नहीं छोड़ते, हालांकि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता. आपका फेवरेट, आपको बिरयानी पसंद है, बुखार में बिरयानी नहीं अच्छी लगती. Why? Because my taste of my mouth is changed now because I'm ill. और हम क्या करते हैं? हम दवाई भी खाते रहते हैं और खाना भी खाते रहते हैं. हमें पता है थोड़े दिनों की बात है, जैसी बीमारी दूर होगी टेस्ट वापस आ जाएगा. ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है. और हार्ट एक्चुअली इट्स इल. गुनाहों के मरीज हैं हम. हमें जिक्र में टेस्ट नहीं आ रहा, हमें नमाज में एंजॉय नहीं मिल रही है, हमें तिलावत की बरकत और रूहानियत नहीं मिल रही है. मगर keep coming, keep doing zikr. In few days, when your heart take a noor of zikr, inshallah, you will receive a taste of zikr, inshallah. Noor of zikr, noor of tilawat. जैसे ये गुनाहों की बीमारी दूर होगी, आपको सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी. आप दुआ करोगे, आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे. आप जिक्र मदीना करोगे, आप झूमने लग जाओगे. आका की बातें होंगी, आपका दिल झूमने लग जाएगा.
अभी प्रॉब्लम ये है कि दिल में बीमारी है, इसलिए बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। छोड़ के मत जाना, अल्लाह के घर को छोड़ के मत जाना, जिक्रुल्लाह की महफिल छोड़ के मत जाना, इज्तिमाअत को छोड़ के मत जाना। ऐसा फील होता है कि यार मुझे तो बोरिंग हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये मत समझो कि जिक्र में मजा नहीं है। दिल बीमार है, जिस दिन दिल ठीक हो गया अल्लाह तुम्हें जिक्र का लुत्फ देने लगेगा। वल्लाही फिर मजा ऐसा आएगा, खत्म करने को जी नहीं चाहेगा। तुम्हारी रातें गुजर जाएंगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो रात कैसे गुजरी। अल्लाह अकबर, क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। फिर ऐसा लुत्फ आएगा कि अकेले में भी आंसू बहेंगे, यादें मदीना में भी रातें बसर होंगी। दुरूद पढ़ोगे तो मदीने की यादों में गुम हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे तो रब का जिक्र करने को और जी चाहेगा। मगर ये जब होगा जब ये बीमारी दूर होगी। प्रॉब्लम ये है, हम इलाज के लिए आते हैं, एक डोज मिलती है, दूर भाग जाते हैं। डॉक्टर की एक डोज से ठीक नहीं होता, हमें कंटिन्यू डोज कोर्स पूरा करना पड़ता है। हमारी बीमारी तो बड़ी पुरानी है, दिल तो पहले ही बड़ा काला हुआ है, जिक्र से बड़ी दूरी हो गई है। एंड इफ यू वांट टू क्लियर योर हार्ट, इफ यू वांट नूर इन योर हार्ट, keep coming in ijtimaat like that and try to recite more and more zikrullah and durood pak on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah one day come, then your heart become clean, और उसके बाद जो जिंदगी का मजा होगा ना, फिर इंशाल्लाह दिल को सुकून भी मिल जाएगा। क्योंकि बात यही है जो रब ने कुरान में फरमाया है, वो हक है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह मुझे और आपको अपनी जिक्र करने वाली जबान अता फरमाए, जिक्र का शौक भी अता कर दे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतना जिक्र करते थे कि एक बार एक जगह गए, अब जिक्र करते करते बाबर शॉप पे गए, तो बाबर ने कहा कि प्लीज स्टॉप योर जिक्र, आई वांट टू रिप योर स्टैचूज। मैं आपके मूछें काटना चाहता हूँ, आपके होंठ हिल रहे हैं, कहीं इसको कट ना लग जाए, चोट ना लग जाए। सुनो सैयद जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं, फरमाते होंठ कटते हैं तो कट जाएं, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। Each and every moment they love to जिक्र। और हमारा क्या हाल है, हमारे महीनों गुजर जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। प्लीज आज से नियत कर लो, इंशाअल्लाह तस्बीह रखा करो, जेब में तस्बीह रखा करें। आजकल बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, ठीक है, if you want to walk, you're making walk daily, so try to make your walk time as a zikr time. Always whenever you're walking, take your tasbih with your hand, make tasbih of zikr and durood, and inshallah all the streets when you walked, inshallah they all will be witness of your zikr and durood, inshallah on the day of qiyamah. अल्लाह मुझे और आपको सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरकतें नसीब फरमाए। इनकी अच्छी सारी आदतें अच्छी थी, अल्लाह उन आदतों में जो खौफ खुदा था हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। जो नमाजों का शौक था अल्लाह इनके बदले हमें, इनके सदके हमें नमाजों का शौक अता फरमाए, तहज्जुद की बरकत अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बना दे और खूब अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कैसे कमालात से नवाजा। आखिरी बात सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि आप बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवा रहे हैं जिन्नात के जरिए। अच्छा, ये काम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू किया और आपने उनको विल किया, आपने उनको वसीयत की कि आपने कंप्लीट करना है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होते थे और जिन्नात तामीर करते थे। अल्लाह ने आपको पावर दिया था ओवर जिन। अच्छा, हुआ ये कि आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया, तो आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी मौत का, दुनिया से जाने का जिन्नात को पता ना चले। अल्लाह ने क्या शान आपको अता फरमाई कि जिस स्टिक स्टफ असा के सहारे आप खड़े थे, आप उसी स्टिक के साथ खड़े रहे और आपकी रूह कब्ज कर ली गई। और अबाउट 1000 years आपका जो जिस्म मुबारक है वो खड़ा रहा और जो जिन्नात थे वो समझे कि आप देख रहे हैं और वो तामीरात करते रहे। और जब तामीरात कंप्लीट हो गई तो उस असा को टर्मिन्स ने उसको खाया और असा मुबारक टूट गया। आप भी जमीन पर तशरीफ लाए, फिर उनको पता चला कि आप दुनिया से चले गए हैं। सुभान अल्लाह। जब उसके बाद वो फिनिश हो गया, उसकी क्या नाम है तामीरात, तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दुनिया से जो जाना है वो उनको पता चला। तो बहरहाल ये उनकी शान है। अल्लाह करीम सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको अंबिया इकराम का फैज़ान नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में
हमें इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। अल्लाह से मोहब्बत सिखाई जाती है, रसूल पाक से मोहब्बत सिखाई जाती है, अल्लाह के जिक्र का हमें शौक दिया जाता है। आज आप बड़ी तादाद में एल्सबरी में हफ्तावार वीकली इज्तिमा में आए हैं, बट इट्स नॉट ओनली वीकली इज्तिमा, इंशाल्लाह एवरी वीक इज्तिमा विल टेक प्लेस, सो प्लीज कम एवरी वीक इंशाल्लाह। व्हेन यू कम अगेन एंड अगेन, एज आई सेड, जितना आओगे उतना दिल क्लियर होता जाएगा, साफ होता जाएगा। तो इज्तिमात में आते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। एंड अगर थोड़ा फास्ट वाला कोर्स करना है, कहते हैं डॉक्टर साहब को जरा रैपिड वाली दवाई दे दो, लंबा कोर्स नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट कोर्स चाहिए ना दिल साफ करने का, तो फिर मदनी काफिले में सफर करना। हाँ, 3 days, 12 days, 30 days, सुभान अल्लाह, 30 days में तो नूर नला नूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे मदनी काफिले पूरे यूके में सफर करते रहते हैं, तो आप भी मदनी काफिलों में सफर करें। अल्लाह के जिक्र का शौक भी पैदा हो जाएगा, अल्लाह के घर में बैठने का सुकून भी मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अपनी इबादत का शौक नसीब फरमाए। मेरे आमाल की इस्लाह करम से